also supposedly it also plays a role, but what role we don't know. ठीक है. And now we also have a geheimnis now, and जो कि Braut मतलब ein Geheimnis, das die Braut hat, और जो कि वो लीभाबर को नहीं बता सकती है, और हमें भी नहीं पता है कि वो क्या है. मतलब वो ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, लेकिन अदरवाइज वी डिडंट नो ना. अगर यू वर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू वुडंट नो कि कौन सा Geheimnis है. Es ist ja noch ganz unentschieden. हाँ, मतलब ये चीज, और अभी कुछ नहीं पता क्या होगा. तो उसने स्टिमर भी बोल रही कि कुछ अभी डिसीजन नहीं लिया है, तो केलनर कह रहा है अभी कुछ नहीं पता. हाँ, तो इट ऑल मतलब यू गेट द आइडिया. वाइटर वाइटर क्या मतलब खत्म थोड़ी हुआ है. अच्छा, अब क्लास एक्सटेंड करोगे? Because I also started late and apparently nobody really utilized that time to read anything. ठीक है, चलो ओके. बट लेट अस जस्ट कंप्लीट. अभी तो हमने इनहाल्टी बात, बाय द वे अभी हमने इनहाल्टलिश ही बात किया. व्हाट अबाउट उसके अंदर जो चल रही हैं चीजें, अब वो भी इनहाल्टलिश भी कंप्लीट नहीं किया. तो व्हाट इज हैपनिंग till the end. फिर क्या होता है, फिर ऑब्वियसली आफ्टर हियरिंग दिस एंड अदर पीपल, बालिका एंड ऑल, जो भी दूसरे लोग कहते हैं अब तुमने सुन लिया ना उसका आंसर, अब जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो चला जाता है दुखी होकर बाहर. यही है इसमें. ही इज लाइक इन शॉक, एंड ऑब्वियसली जब आना ने बोल ही दिया क्लियरली कि आई कांट, सो ही लीव्स. और फिर बालिका इज ऑब्वियसली बीइंग वेरी nasty while he is leaving, etc. What is the role of Pfeffer here? हाँ, Pfeffer 52 onwards आते हैं. there are, no, you tell me first of all, there are at least two meanings to it. दो जगहों पे आया है Pfeffer It's word. the title also, and that's why I was wondering what's the meaning, because suddenly it says Anna hat Sitztun Artischun hat ein Glas vor sich. And he smells the glass and he says Pfeffer, Pfui, Teufel. हाँ, तो अगर यहाँ पे बात करें what is Pfeffer here, it's a drink, and it's a Heilmittel drink. ना, this is like a ishara towards that secret which is not told, That she's but pregnant. that she is not drinking, she is actually taking something else. This is one thing. Pfeffer here, it's a Heilmittel. Okay. दूसरा you had Pfeffer, जो Hase im Pfeffer जो ऊपर आया था, वो तो है the which means कि what is the actual thing here. हाँ, that is the your Redemittel, या जो भी कहते हो Reda window होती है तुम्हारी. आया था ना ऊपर. Das ist die eigen, यही Hase im Pfeffer जो था. So what is the actual thing here? So Pfeffer obviously is like this पहली बात. Okay. हाँ, this thing ki which is telling you कि well, it's not like not necessarily, these titles are not necessarily deep, क्योंकि पहला वाला भी Africa था, that's like one thing. In the end, the man from Africa comes back, so that is the title. In the end, she takes Pfeffer, and that is the title. Obviously, that is also the Geheimnis, which you can rattan कर सकते हो perhaps. Also because it is indicated through Lilia Haben, जिसका हमने already दो मतलब निकाल ही लिए. So that is the, I think, the significance of Pfeffer here. But how is it ending now? This other thing, कि अब ये she's like sitting here, she's not really happy about her decision, but she did it anyway. She told him to go away. She can't be with him. Und dann Anna lächelt. You start hearing sounds of machines, Yeah, and Babush says it's starting. The masses are like coming. Spartacus steht auf. Spartacus steht auf, der Mord geht weiter, alle stehen starr, horchen hinaus. ठीक है? मतलब this is not what he is saying. This is like what's happening. And he has gone away in the end of this act. हाँ. ठीक है? So it's ending with this Spartacus rising up. ठीक है? Okay.
always. Now मतलब ये तो हुआ इन हाल जिसमें हमने 1.5 घंटा लगाया, पर ठीक है. कि हुआ क्या है इसमें. The thing that we wanted to discuss here within this act is, what do you think it is signifying, this kind of discussion between all these people? एक तो हमने कुछ कुछ तोड़ टूटी बातें तो कर ही ली हैं. एक सेकंड, ये क्या खोला मैंने. I have not even shared this folder. Let me come back to this. एक चीज जो हम डिस्कस करते ही करी है हमने बीच बीच में, वो है तुम्हारे क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज की गई है कि इट्स गेटिंग हीटेड एंड सडनली इट इज ब्रोकन in this way. That is an important stellar to discuss, Fremdung's effect in this act. But what else is there? What is this act really capturing? ये तो एक पॉइंट है जो मैं लिख नहीं रही हूँ, बट यू गेट दैट. जो बीच में जो स्टेला आई है जिसने खेलना है वो बंदा बात कर. And of course, what are the other Fremdungseffekte? We are not really talking about them in detail because they are also repetitions. जैसे their Mont und their Wind, ठीक है, all this is again emphasized upon gespenst, this and that. So all that which is supposed to create drama is actually satirized. ठीक है, कि वो आ गया, विंड चल पड़ी है, कुछ अनहोनी हो रही है, this and that, all that stuff is being thrown in exaggeration so that it becomes a satirization of that. ठीक है, parody of that. So this is one thing which I'm and the other thing is जो अभी हमने बात की है, जो खेलना का उसकी थी. But what about the actual significance of the Gishpresh that was happening here? So initially, मतलब, what do you think? What theme is being captured here? Is it the class, the class struggle, like how they perceive each other? Let's talk in terms of conflict instead of struggle. Class and Kampf is a larger thing, yeah. But there is a clear class thing going on here. You have einerseits Balecker und Murk and obviously Frau Balecker. You have andererseits Andreas, Kragler and Kellner and Marie. Marie. You have these two classes. Conflict यहाँ पे बहुत clearly चल रहा है. And obviously your conflict is around Anna, no doubt. Anna is the central woe, caught up between these two things, these two directions. But this can be seen as a metaphorical thing also. Like it's like who deserves, although it's a problematic thing. And when you read, and I hope you are reading, when you will find time to read that after you have read the text, whole text, ये कि ब्रेस्ट खुद क्या कह रहा है इस चुप के बारे में. ठीक है, कि to even talk about Anna as if she is the metaphor of the things that you have in life. ठीक है, it's a problematic thing to say. ठीक है, which has been एक तरीके से indicated already कि she is doch kind of क्या था उसमें, काफे पुलवर या कुछ लिखा था उसमें. You can't just tear her apart like that. She's not a thing. But on the other hand, such words are also used that अब उसने इतना सहा है लाइफ में, muss seinen Vibe haben, which is a very problematic thing to care. Anyway, ठीक है, so you have this einerseits und andererseits you have this. And मतलब हम अगर बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे तो you see कि all three of them reflect different ways in which you respond. मतलब that Feindlichkeit can find very different ways. You can have a sympathetic but still feindlich towards that you are not willing to accept that. But you are being sympathetic, या you are trying to convince कि नहीं, ये तो काइजर चाहते हैं कि भैया सहते तो हर कोई है लाइफ में, और ऐसे ही अपना सर उठाए चलते रहो, this and that. ठीक है, that sympathetic Feindlichkeit. You have the calculative cold Feindlichkeit where there is no personal attack on anybody per se, but you are just Feindlich. ठीक है, because you don't see any use in association with that person. And you have this thing where you see yourself as victim of the situation and not the other person. You think कि उनको तो ज़्यादा ही वो मिल रहा है, हम suffer कर रहे हैं. We are the ones who are suffering. I am the one who has suffered. So why should I sympathize with it? So you have these three things going on here.
On the other hand, मतलब obviously यहाँ पर it's Keller और मारी जिनके अंदर एक consciousness है कि they are siding with it. Kragler is not like asking for any sympathy, but they are automatically siding with him. अभी later on he will join the revolution, वो तुम you'll see. But अभी ये चल रहा है, ठीक है? तो you are right in saying this कि there is a clear class and conflict being reflected in this discussion. And through what? Through this double realm, ना? This sui realm, Roymer जो यहाँ पे use किए गए हैं शुरुआत से ही, हाँ, these are their inner realm versus their outer realm. Here actually you have this bar inside of the bar versus streets outside. I mean, जहाँ पर ये भी तो हो रहा है ना, 10 privat and 10 politischer. और यूजुअली तुम्हारा जो ब्यूरगरटूम वाला चीज रही है that has been mostly about 10 privat. हाँ, but यहाँ पर the conflation that there is a necessarily an intersection between these two, Roymer, that there is no clear distinction between what is happening inside and what is happening outside. अभी तक वो चीज क्लियरली नहीं आई है, मतलब इट हैज नॉट एक्चुअली इन हार्टलिश इंटरमिंगल नहीं किए हैं, लेकिन इन नैरेटिव इट हैज इंटरमिंगल्ड अ बिट. हाँ, जहां पर तुम्हारा ये मिशमाश जो शुरू हो गया था, हाँ, तो देयर इट इज यूज्ड एज अ स्ट्रैटेजी, ऑल्दो इन हार्टलिश वो रोयमा इंटरसेक्ट नहीं किए हैं अभी एक दूसरे से. अभी नेक्स्ट एक्ट में करेगा जब वो इज एक्चुअली गॉन आउट. तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग टू नोट. जब हम लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ते हैं, स्पेशली वेयर नरेशन इज इन्वॉल्व्ड, studying realm is also important कि where is it taking place. Is it taking place inside? जैसे तुम्हारे कौन है अपनी प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखी थी? जो भी हाँ, ठीक है. तो जेन ऑस्टन की फॉर एग्जांपल इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इनर रोयमर, privat रोयमर, ठीक है. she has never, apart from maybe later work में, she has never explicitly dealt with what is happening out. जबकि उन टाइम से इतनी पॉलिटिकल अपहीवल्स चल रही थी, but she never dealt with it. It's always about privat रोयमर. और यहाँ पर your play has deliberately chosen love story, which is a privat realm. ठीक है, it's about two people in love, but at the same time in such a way that it has to intersect with the äußere Raum. ठीक है, it cannot be a inner Sache anymore. It necessarily becomes a thing between two different classes. A person who is coming back, a soldier, a person who does not have anything, who has suffered from war, a soldier who is coming back after 4 years, and a person who has profited from the war and एक तरीके से risen within the capitalist system, ठीक है, in the society, ठीक है. तो he has made use of these, one who has suffered and one who has, जैसे कि the proletariat suffers and the capitalist profits from this, ठीक है. वो आज तक भी चलता है कि वॉर से कौन प्रॉफिट करता है और कौन सफर करता है. तो ये तुम्हारा चल रहा है यहाँ पर. It necessarily there is an intersection which is also enacted clearly in the second act जब ये मिशमाश हो रहा है तुम्हारे डायलॉग्स का, ठीक है. This is one point, but I mean the next point is, but what about Babush? I feel Babush, because he's a journalist, so it is more his curiosity, or he maybe like he's showing sympathy at the same time, slight sympathy, like he wants to hear what's happening, but it is because he's a journalist and maybe he wants a story or some controversy. Okay, ठीक है. तो this is interesting कि there is this problematic thing going on here as well. There is this controversy in Heartlish. Where can you, मैं यहाँ पे stop कर रही हूँ, ये share करना, I'm sharing again the text, ठीक है. Can we now come to the exact stellen where we can, जैसे कि इसमें तुमने कहा था you get more access to the characters now, ठीक है, कि वो है कैसे. And obviously you see, हाँ, एक second, let me share. सुमित चला गया. सुमित चला गया, okay. बहुत टाइम से. चलो anyway, तो बट एनीबडी कैन से दिस कि तुम्हारा ये बाबूश के कैरेक्टर में कहाँ कहाँ तुम्हें नजर आ रहा है कि लाइक यू सेड कि ही इज Einerseits, हाँ, he seems to be sympathetic because he wants people to speak up and he says कि हाँ, तुम इसकी कहानी तो सुननी चाहिए, he is the victim, this and that. Einerseits macht er das, no doubt. Like one thing, he went and told Mork himself that he's come on his own. He went and like whispered in his ear that he's back. पहले तो ही मतलब
we don't know where his sympathies lie. ठीक हाँ. है, ठीक है. So he himself told, but he is like actually acting like, uh, which is not necessarily to be वो क्या बोलते हैं, criticized, that he is the truth teller ना of society. ठीक है, is telling the truth. उसको जाके कि ऐसा हो गया, उसको जाके कि वैसा हो गया. But of course you can also, in his own words, you can also see this. कहाँ पर था? I have also marked it ना. I said कि मैं later हम बात करेंगे इस बारे में. Second, That was वो fish वाला thing. He said I need to write about it. Price वाला thing. Like I हाँ, can make a exactly. story out of it. This one, if you can see the screen, हाँ, you can. ठीक है, तो Babusch frisst gedorster Pflaumen aus der Tasche. Jetzt kostet ein Pfund Aprikosen 10 Mark. Naja, ich werde einen Artikel über die Preise schreiben und dann kann ich mir die Aprikosen ja kaufen. ठीक है, sollte die Welt untergehen, dann schreibe ich darüber. Aber was sollen die anderen machen? Ich sitze wie der Dotter im Ei, wenn das Tiergartenviertel in die Luft fliegt. Aber ihr? So this is like a क्या कहते हैं, again criticism of such journalist class as well, where you are actually making money out of stories, yeah, sufferings, है ना. You are telling the story not because you want, because अगर हम इसमें देखें तो Babush is not really अभी, at least in the second act, he's not really क्या बोलते हैं, concerned about Kragler getting back together with Anna. That means he's not really concerned about justice as such, but he's only concerned about telling the story. So there's a difference between two things. And are you telling a story because you want to change the world, or are you telling the story because you just want to profit out of storytelling? You know? So that thing is also getting reflected in his character, which he obviously says very clearly here. But throughout the thing he is showing sympathy, he is encouraging him. ये एक चीज, हाँ. एंड दूसरी और कहाँ पर हो रहा है, दिस ओवर एम्फोसिस ऑन सिटिंग डाउन, जो ये इसी के, दिस इज ऑल्सो अ कॉमेडी एलिमेंट इन दिस एक्ट ना, दैट जिट्सन ब्लाइबन सब बैठे रहते तो हमारी हिस्ट्री अलग होती. ठीक है, कि नॉट डू एनीथिंग, you just sit and talk. Like just sit and talk, yeah. Don't exactly. like fight and all that. Just sit and talk. Not even fight, but also don't even. He's not even concerned about changing the situation. That is the issue. But he's just concerned about, जैसे तुम कह रहे हो, avoiding any drama. ठीक है, उस तरीके से कोई problem create ना हो जाए. So that's again an approach which can be criticized here. Yeah, perhaps it is being criticized here. Yeah. Although he is sympathetic towards this class, but he's not really thinking about changing anything. Okay. Okay, do you want to say something? कोई कुछ बोलने लग रहा था. हाँ, वो sit and talk वाली चीज समझ नहीं आई. Sit and talk in the sense ड्रामा, sit and talk, ये तो सब समझ आ गया, कनेक्शन नहीं बन रहा. ये कनेक्शन इन द सेंस कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम इमर्ज हुई है, विच इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की who should get the girl. ठीक है, this is a stereotypical story. Should Kragler get the girl or should Mork get the girl? So within this, where is Babush's stand? There is no stand visible, है ना, पहली बात. And also there is no there is, although a shine sympathy visible, there is a sympathy ऊपर से, in the sense that you sit down and tell the story, but not necessarily that the justice should also be served. वो वाली चीज तो नहीं नजर आ रही उसमें, at least in this act. अच्छा, तो what all he wants is the spice and not the justice. एक चीज तो ये है कि हाँ, he is profiting, which he directly says, जो भी हमने मार्क किया है aprikosen वाली उसमें, कि his concern gets restricted to telling the stories, and through that at least he will be able to get out of the situation about which he is writing. जैसे कि अगर महंगाई है तो महंगाई के बारे में लिख के एटलीस्ट मैं तो अफोर्ड कर लूंगा, ठीक है, या मैं तो वेल्ट untergang के बारे में भी लिखूंगा, लेकिन तुम लोग क्या करोगे. दिस इज अ satirical thing जो यहाँ पे बोली गई है ना. It's like talking to the viewers कि sollte die Welt untergehen, dann schreibe ich darüber. Aber was sollen die anderen machen? Ich sitze wie der Dotter im Ei. Wenn das Tiergartenviertel in die Luft fliegt, aber ihr,
बस मार किया, ठीक है. इट्स लाइक स्पीकिंग टू द सू शावर. तो तुम क्या करोगे, मैं तो बच जाऊंगा, बट तुम क्या करोगे. So there is a simplistic critique also on, and obviously in the significance of it is ki or the Arbeiter draußen are actually taking over newspaper. वो ना तुम्हारा ये इसीलिए तो फेडरल पे को टेक ओवर कर रहे हैं ना ये लोग बाहर स्पार्टाकुस में. So perhaps he's also, although he appears to be sympathetic towards proletariat, but perhaps he is speaking from another point of view. But abhi we can only make some observations because it's only the second act. Let's see how things pan out later. But ये सब points clear हो गए. जो हमने आज discuss किया. हाँ कुछ. हाँ. Okay. So do you want to add something to it, or do you want to ask something? So then können wir Schluss machen, लेकिन with this appeal कि जो next acts है, there are 3 acts left, or with the second act half of your play is done, as you can see. है ना, half of the play is done. It does not take much time to read it. ठीक है, तो please Tuesday तक my appeal is read the whole play. The third act तो वैसे भी छोटी सी है, उसमें तो बस इतना ही हो रहा है ना तुम्हारा कि ये बाहर निकल रही है अपनी कौन है अपनी आना टू लुक फॉर हिम. ही ऑन द ही इज गोइंग टुवर्ड्स वो He's with Mari. हाँ, मतलब मारी वो ही इज नॉट विद मारी बट मारी इज लाइक फॉलोइंग हिम, सिंपथाइजिंग. ठीक है, तो ही बात बोलता है ना बीच में क्या क्या डू यू वांट टू स्लीप एंड शी सेज नो, देन आई वांट टू बी अलोन. ठीक है, तो she is following him, and obviously she also favors him, his situation. She has sympathies for him. He is going towards the place जहाँ पे ये सब चल रहा है उनरुआ. हाँ, and Anna has changed her mind, and she now is going back to get, basically going out to get him back. And मतलब you can, it's a very 4 pages की है ये second third act तो, है ना, कि you have this she is asked Babush to go with her and look for Andreas, and now she does not care anymore whether she is with child or not. She wants to be with Andreas. And Mork is completely besoffen, and the Keller is now supposed to bring him back. वो सब बाहर आ गए थे, but now he's supposed to bring him back to his, मतलब जो भी बार था वहाँ पे, so that he's safe, and मतलब safe from the weather as well as Unruwa. And now Anna is Anna ही है ना, who is going out to look for ये कौन है अपना Kraken. ठीक है, मतलब मोटा मोटा यही हुआ है इन हार्ट में. देयर इज ऑब्वियसली सम अदर 2 पीपल, बट स्टिल डू रीड इट. वी कैन डिस्कस अ बिट अबाउट इट एंड द नेक्स्ट 2, द लास्ट 2 एक्ट्स. ठीक है, तो कंप्लीटली फिनिश कर देना उसको. ओके Okay. ठीक है. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? No. ठीक है, चलो. ओके, आई मीन देन आई एम होपिंग that on Tuesday a lot of you are going to speak, na? What kind of questions will come in the exam? Like, in the sense, do we have to write an interpretation or हाँ, interpretation? इसी टाइप के क्वेश्चन. फॉर नहीं, मैम एग्जांपल इतना आसान पेपर नहीं बनाती. नहीं. खतरनाक सा बनाती हैं बहुत. अच्छा, ठीक है, तुम अच्छा, शेयर 2 कर स्टोरीज देना. ऐसे दे देती है, 2 स्टोरीज दे देती है, फिर उनका एक रेफरेंस, मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस देके फिर उस पे इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है. ऐसे हाँ, तो सिंपल ठीक है. सिंपल क्वेश्चन नहीं आते कि ऐसे लिख दो, बस इसकी इंटरप्रिटेशन लिख दो, खत्म. नहीं. ओके, तो ठीक है. एमए में तो तुम्हें वैसे भी नहीं लिखने चाहिए ना इंटरप्रिटेशन, और वैसे भी वो सब मिल ही जाती है नहीं लोगों मैम, को. बीएमए में भी नहीं, आपने ऐसे कर हाँ, दिया था. तो ठीक है. तो क्योंकि मेन इशू इज नॉट कि लिखो इंटरप्रिटेशन ना, वो तो जो हम कर ही रहे हैं. मेन थिंग इज कि आर यू इन पोजीशन टू यूज योर ब्रेन. ठीक है. पैंथर और इन्वेंटुआ का वो दिया था अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए. हाँ, तो ठीक है. जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया ही है कि इट्स लाइक यू कैन एक्चुअली तुम्हारा ये टोटस फूगा और ह्यूरे इजराइल का कंपैरिजन किया जा सकता है. बट एनीवे क्वेश्चंस लाइक दीज कैन कम ना तुम्हारा. जैसे कि आई कैन आस्क कि यहाँ पे बाबूश जो है एज अ जर्नलिस्ट, वो क्या रोल प्ले कर रहा है विद इन दिस होल क्लास कॉन्फ्लिक्ट. But like, will you give the excerpts from this also, because we won't remember? देखो, एक चीज तो ये है कि ऑल्दो आई एम होपिंग कि
सिचुएशन विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल, लेकिन आई डाउट इट, ठीक है कि हो सकता है कि तुम्हारे टाइम पे भी ऑनलाइन एग्जाम ही होने वाले हैं, तो उस केस में एक्सेप्ट की तो बात ही नहीं, यू हैव बुक्स इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। बाकी देखो हर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इफ आई वांट टू गिव समथिंग स्पेसिफिक देन आई विल गिव यू कोटेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, बट इफ आई एम आस्किंग समथिंग जनरल, जैसे इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट और मे बी परहैप्स किसी और टेक्स्ट में क्लास कॉन्फ्लिक्ट दोनों में कैसे डील किया गया है, यू डू कंपैरिजन, इट्स अप टू यू, ठीक है, कि व्हाट्स इट कोटेशन तुम कहाँ से निकाल, मतलब कौन से लगाना चाहते हो कौन से नहीं, बट बेसिकली यू शुड बी, मतलब यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस टेक्स्ट एंड द अदर टेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे जैसा भी होगा, एंड यू कैन डू दैट, ठीक है। तो उसमें यू हैव द एक्सेस टू द टेक्स्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, इफ इट्स अ लॉन्गर टेक्स्ट, आई एम इन एनी केस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कोट वर्ड टू वर्ड from the text, ठीक है। मेन थिंग इज कि you have arguments, वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं व्हेन आई गिव यू एन असाइनमेंट, तो उसमें एक एग्जांपल मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट, ओके, डन। एनीथिंग एल्स Ma'am, in this semester we're gonna deal with like these kind of shorter narratives only, like I'm just wondering, like some other universities used to provide novel also, so my concern is, बोलो, I just want to ask you, like, because I haven't got any chance, like in the previous classes, we're gonna deal just shorter narratives or small or short texts in this semester, right? In MA. देखो, I was told specifically कि perhaps we should not start with novels. Otherwise, I had some novels envisaged, ठीक है। लेकिन मुझे बोला गया था कि since many of you are not really from literature background, so it would be too much, too overwhelming. So main idea, it's not about the length of the text, it's about how do you look at a text. So you start with shorter text. बोलो. Like back in 2020 or 2019, were they supposed to be novels in the first semester only? देखो, it's not about novels. देखो ऐसा है कि तुम उस चीज को, हाँ देखो, हमने for example when I started in MA1, but हमारा annual mode हुआ करता था, ठीक है, we were given बहुत heavy novels, no doubt about it, but we also had a lot of time to read that. And I could have also given that, but main बात ये है कि since we know, I am told कि a lot of you don't have access to, I mean you perhaps come from that background, लेकिन सब नहीं है जो लिटरेचर के बैकग्राउंड से, सबको नहीं पता एनालाइज कैसे करना है, तो दैट इज द फर्स्ट thing that you need to learn, and that is best done in shorter forms. हाँ, और वैसे भी मैंने दिया तो है एक नॉवल, द नेक्स्ट वन Am Kürzel Ende der Sonnenallee, although it's a abridged version and although it's a Jugendroman, but it is a roman, the next text which we are dealing with. It's not a heavy novel that you will start dealing in the next semester. If, for example, if I continue, I'm just muting you क्योंकि मेरी आवाज चल वो हो रही है, हाँ, ठीक है। In the if I continue with this course, हमारा themes and strategies, and I already have some novels in mind which I would like to share with you and we can study those. लेकिन अभी तो मैं यही देख रही हूँ ना कि तुम इतना सा टेक्स्ट नहीं पढ़ के आ रहे हो, so first of all you need to improve on that also, ठीक है। Actually, ma'am, like as compared to other universities, no, like I think our syllabus is like pretty good because I got confused in other university syllabus. So that's why like my main concern was to just let us know or let me know about the like what kind of a text we're gonna deal. Yeah. हाँ देखो, ऐसा है कि वही मैं जो बता चुकी हूँ, वन कोर्स तो तुम्हारा शॉर्टर नैरेटिव, उस पे तो इन एनी केस यू आर गोइंग टू डील विद शॉर्टर नैरेटिव्स, नॉट लॉन्गर टेक्स्ट्स. In our course you are supposed to deal with a mix of texts. Since it's literature and conflict, तो ठीक है, perhaps we have to restrict ourselves to literature, but हम तो इसमें movies भी deal कर सकते हैं, novels भी deal कर सकते हैं, कुछ भी deal कर सकते हैं, ठीक है. Themes and strategies is an open course in that sense. हाँ, तुम्हारा cultural history third course जो है उसमें तो in any case the focus is on something else. Texts are only examples, या पढ़ोगे तो शायद excerpts पढ़ोगे, but major focus is on the development of culture historically. और the fourth तो I think translation चल रहा है ना तुम्हारा, the fourth course. Yes. हाँ, तो maybe in the first semester you don't have novels, but be ready for that in the next semester, because I think next semester you already have your तुम्हारा जो कौन सा है शॉर्टर नैरेटिव का जो कोर्स है, स्टडी ऑफ अ जॉनर है ना ये,
it already in the focus shifts from shorter narrative to roman. ठीक है, तो novel is the theme of this particular course. So you have roman as one course in which you are going to deal with longer text, obviously. Then you are going to have, if this course is going to get continued or any other course जो भी है, then I would like to include novels in this. ठीक है, वो मैं पहले से शेयर कर दूंगी. You need to read them and we can deal. So next semester में you will get a chance to read longer texts. ठीक है. It's only the first semester which is supposed to be not too overwhelming for students, which you can use to now create good habits like reading the text on time. ठीक है. Okay. Anything else? No. No, ma'am. ठीक है, चलो. ओके. एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम बोला था कि we were supposed to, this is for the students who joined late, लेकिन आज since we don't have time left, let me know when you want to meet again to discuss. मतलब जो अगर तुमने जैसे आउट ऑफ फ्लुक्ट पढ़ लिया है, हाँ, कब रिविजन करना चाहते हो, बट फॉर दैट ऑल ऑफ यू आर 4 people ना जो करना चाहते हैं ये चीज, तो यू लेट मी नो कि हमने पढ़ लिया एंड वी वांट टू डिस्कस दैट. Ma'am, how about Saturday? If like 3 of others, like, हाँ, तो ठीक है, all डू टॉक टू देम इफ दे आर फाइन विद इट. देन all right, then सैटरडे. I'll message in the, हाँ all right, then I'll message in our group. हाँ, इन आर कॉमन ग्रुप जो मैंने 4 जनों का बना रखा है उस पर कर देते. ठीक है. Yeah. ठीक है. ठीक है, All right. चलो. ओके डन. हाँ. Einen schönen Abend noch und wir sehen uns am Dienstag. Danke dir auch. Danke. Tschüss, Mom. Tschüss. Danke.